गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सेंटर नोटिफाइज सीएए रूल्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं और अब जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है वो इससे इन्फोर्स हो जाएगा। तो सीएए जो है वो इलीगल इमिग्रेंट की डेफिनेशन को जो है अमेंड करके हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन्स और क्रिश्चियंस जिनको पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में परसिक्यूट किया गया है और वो इंडिया आ गए थे, उनको जो है फास्ट ट्रैक इंडियन सिटीजनशिप देने के लिए जो है ये एक्ट बनाया गया। तो इसी एक्ट के अंदर ये भी प्रोविज़न रखा गया कि अगर ओसीआई रजिस्ट्रेशन किसी की है लेकिन उसने सिटीजनशिप एक्ट के प्रोविजंस वायलेट किए हैं या कोई भी और लॉ को के प्रोविजंस वायलेट किए हैं तो उनके ओसीआई कार्ड जो है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो एलिजिबल कौन है सीएए 2019 के लिए? जो भी लोग फोर्स किए गए या कंपेल किए गए, परसिक्यूशन उनके धर्म के नाम पर उनका परसिक्यूशन हुआ इन तीनों कंट्रीज़ में, उन और वो 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले इंडिया में आ गए थे, उनको ये सिटीजनशिप दी जाने वाली है। ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल एरियाज़ हैं वहाँ पर ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। इनर लाइन परमिट रिजीम जो है जहाँ पर जिन स्टेट्स में, वहाँ पर भी ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। अब असम जैसी स्टेट में प्रोटेस्ट चल रहे थे क्योंकि ये कहा जा रहा है वहाँ के लोगों द्वारा कि ये असम अकॉर्ड की वायलेशन है और इससे जो है परमानेंटली डेमोग्राफिक्स जो हैं स्टेट के वो ऑल्टर हो जाएंगे। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स जो हैं वो नोटिफाई किए हैं उसमें कहा गया है कि सिटीजनशिप जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ नेचुरलाइजेशन के द्वारा जो है वो एफिडेविट के थ्रू दी जाएगी। एप्लीकेशन जो है वो एक एम्पावर्ड कमेटी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी द्वारा काम करेगी, उनको सबमिट की जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है वो वेरीफाई करेगी डॉक्यूमेंट्स, फिर जो है ओथ जो है वो दिलवाई जाएगी एप्लीकेंट को, तभी उनको सिटीजनशिप मिलेगी। एप्लीकेंट्स के पास जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि हाँ वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश से हैं, चाहे उनके जो है वो डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर भी हो चुके हों। ठीक है, लेकिन बस प्रूफ चाहिए कि हाँ वो इस कंट्रीज़ के हैं। और इंडिया में वो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो है वो एंटर हुए थे, उसका भी प्रूफ दिखाना पड़ेगा उन्हें। ठीक है। और फिर एप्लीकेंट्स को एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके बेसिस पर उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी। अब ये न्यू रूल जो है वो एम्पावर्ड कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को को जो है पावर दे रहा है कि ये एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोसेस करेंगे और इनको इलेक्ट्रॉनिकली ही जो है वो प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिशन दिव्यास्त्र। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने एक अग्नि मिसाइल टेस्ट की है जिसमें मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी करने की कैपेसिटी है और वो मल्टीपल टारगेट्स को एक ही बारी में जो है साइमल्टेनियसली जो है हिट कर सकती है। इस मिसाइल सिस्टम में इंडिजिनस एवियोनिक सिस्टम लगाए गए हैं, हाई एक्यूरेसी सेंसर पैकेजेस हैं। ठीक है। तो अग्नि 5 जो है उसमें मीर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, और इसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की है। ठीक है। अग्नि 5 में 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन का यूज़ किया गया है जो मोस्ट पार्ट्स ऑफ द चाइना में रीच कर सकता है। तो ये मीर टेक्नोलॉजी क्या है ये हम समझते हैं। बेसिकली एक ही मिसाइल से आप मल्टीपल टारगेट्स जो है 100 किलोमीटर जो चाहे दूर हों आप उनको टारगेट कर सको, उसको हम मीर टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो जैसे यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, अभी तक इनके पास ही मीर टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अब इंडिया के पास भी आ गई है और इस मिसाइल को चाहे लैंड या सी दोनों से ही जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। अब अगर हम बैकग्राउंड देखें तो मीर जो है वो अर्ली 1960s से बनाए गए, यूएस ने सबसे पहले बनाया था इस टेक्नोलॉजी को। तो इसको बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें कई तरह के कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं, लार्ज मिसाइल्स के, स्मॉल वॉरहेड्स के, एक्यूरेट गाइडेंस सिस्टम चाहिए होता है और मिसाइल्स को डिफरेंट स्पीड्स पर लॉन्च करना, डिफरेंट डायरेक्शंस में लॉन्च करना, ये सब जो है वो ध्यान में रखकर ही इसको बनाना पड़ता है। ठीक है। अब हम देखते हैं अग्नि मिसाइल्स क्या हैं। तो ये इंडिया के क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस देने में अग्नि मिसाइल सिस्टम का बहुत ही बड़ा रोल है। सॉलिड प्रोपेल्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, 700 से लेके 5000 किलोमीटर तक की इनकी रेंज है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो 1989 में सबसे पहला अग्नि 1 मिसाइल जो है वो टेस्ट किया गया था और ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो
लॉन्च किया है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया है क्या? प्रीमियर ऑटोनॉमस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर, जो कि प्रमोट करती हैं आईटी या आईटी इंडस्ट्री को, इनोवेशन को, आर&डी को, स्टार्टअप्स को। तो इसको बनाया गया था सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के लिए या सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट के लिए। स्टेचुटरी और अदर प्रमोशनल सर्विसेज भी देती हैं ये एक्सपोर्टर्स को। और यही पार्क्स जो हैं ये डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना, माइक्रो एमएसएमईज़ को जो है वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना ताकि वो आईटी सेक्टर में जो है वो एक्सपोर्ट्स दे सकें, ये सब काम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लचित बोरफुकन। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली पीएम मोदी ने 125 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू जो है होम जनरल लचित बोरफुकन का जो है वो अनवेल किया है असम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में। तो लचित बोरफुकन जो है एक लेजेंडरी आर्मी कमांडर थे होम किंगडम के, और वो अपनी लीडरशिप के लिए नोन थे। 1671 की जो बैटल ऑफ सराय घाट है उसके लिए वो बहुत फेमस थे। उन्होंने मुगल फोर्सेस को डिफीट किया। वन ऑफ द 5 बॉर्फोगान्स थे वो होम किंगडम के। उन्होंने जो है वो गेरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, और उनको जो है मैदान जो कि जहाँ पर होम के रॉयल्स या नॉबल्स को ही बरी किया जाता था वहीं पर उनको भी बरी किया गया। तो होम किंगडम क्या है? अर्ली 13th सेंचुरी से अर्ली 19th सेंचुरी तक जिसने असम को रूल किया, लगभग 600 साल तक, एक मल्टी एथनिक किंगडम जो कि अपर और लोअर रीचेस ऑफ ब्रह्मपुत्रा वैली में फैला हुआ था। और मुगल्स के साथ इनका बहुत लंबा टाइम कन्फ्लिक्ट रहा, जो जहांगीर से शुरू होकर औरंगज़ेब तक रहा। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आर पी टी यू ए एस स्कीम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स की रिवैम्ड फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम को लॉन्च किया है। तो इस स्कीम के अंदर सब्सिडीज़ दी जाएंगी बेस्ड ऑन क्वालिटी, कि किस तरह की क्वालिटी जो है अपग्रेडेशन अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज कर रही हैं। तो अगर वो रिवाइज्ड शेड्यूल एम और WHO GMP स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हैं तो उनको उसके बेसिस पर सब्सिडीज़ दी जाएंगी, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको एक्सपेंड करके MSMEs को भी इंक्लूड कर लिया गया है। 500 करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनीज़ या MSMEs को जो है सपोर्ट दिया जाएगा अगर वो शेड्यूल एम या फिर WHO की जो है स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट HVAS सिस्टम्स, वाटर और स्टीम यूटिलिटीज़, टेस्टिंग लेबॉरेटरीज़ भी अगर उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाई है, उसमें भी अपग्रेडेशन की है, तो भी उनको जो है ये इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो अगर हम देखें तो 5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की टर्नओवर वाली जो कंपनीज़ हैं उनकी इन्वेस्टमेंट पर उनको 20% जो है इंसेंटिव मिलेगा। 50 करोड़ से 250 करोड़ वाली कंपनीज़ को 15% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट उनको इंसेंटिव मिलेगा। 250 करोड़ से 500 करोड़ की जो कंपनीज़ की टर्नओवर वाली कंपनीज़ हैं वो जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगी उसके 10% उनको जो है वो इंसेंटिव्स मिलेगा अपग्रेडेशन करने के लिए। ठीक है, क्वालिटी इंश्योर करने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं PFAS। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो MIT के जो केमिस्ट्स हैं उन्होंने टाइनी क्वांटिटीज़ ऑफ PFAS केमिकल्स जो है वो पाए हैं। एक सेंसर डेवलप किया है जो कि PFAS केमिकल्स फूड पैकेजिंग, नॉन स्टिक कुकवेयर और बाकी के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में जो है वो पकड़ सकता है। ठीक है। तो PFAS है क्या? एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन मेड केमिकल्स हैं जो कि वाइडली यूज़ किए जाते हैं वेरियस इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशंस में। पहली बार इनको 1940s में यूज़ किया गया था। इनको हम फॉरएवर केमिकल्स भी कहते हैं, कई बार हमने इसको और भी डिस्कस किया है। ये प्रॉब्लम इनमें ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये डिग्रेड नहीं होते हैं, इनकी हाई केमिकल स्टेबिलिटी होती है, रेजिस्टेंट होते हैं ये हीट, ग्रीस और वाटर को। तो इनको हम स्टेन या वाटर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स, कारपेटिंग, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, पेंट्स, फायर फाइटिंग फोम्स, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। और इनकी वजह से जो है इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ एयर, वाटर और सॉइल हो रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इकोनॉमी के लिए और गवर्नेंस दोनों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है रिसेंटली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की, ताकि अपग्रेडेशन और स्ट्रेंथनिंग हो सके लेबॉरेटरी नेटवर्क की कंट्री में। तो ये BIS जो है नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, जो कि BIS एक्ट 2016 के अंडर बनाई गई स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आती है ऑफकोर्स ये, ताकि सेफ रिलायबल क्वालिटी ऑफ गुड्स मिनिमाइज किया जा सके हेल्थ हैजर्ड्स टू कंज्यूमर्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट किया जा सके। और बेसिकली ये कई तरह की प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम्स भी चलाती हैं। BIS की सर्टिफिकेशन कई बार तो मैंडेटरी है कुछ क्लासेस ऑफ प्रोडक्ट्स में, खासकर जो पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ने कहा है कि एक असेसी को जो है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का क्रेडिट भी मिलना चाहिए अगर वो विवाद से विश्वास स्कीम का जो है बेनिफिट ले रहा है। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है क्या? एक प्रोविज़न है इनकम टैक्स ऑफ इंडिया में जो कि ये इंश्योर करता है कि कंपनीज़ जो हैं वो अगर बुक प्रॉफिट से बहुत जो है अपने एग्जेम्पशंस क्लेम कर लेती हैं और टैक्स कम पर पे करती हैं तो कम से कम इतना मिनिमम तो टैक्स उन्हें पे करना ही है। तो बेसिकली मैट को इसलिए लाया गया था ताकि टैक्स अवॉइडेंस जो कंपनीज करती हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करके उसको अवॉइड किया जा सके। वो एक फिक्स परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट जो है उनको मैट के फॉर्म में देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सभी कंपनीज के लिए ऊपर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। बट ये उन कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं है जिनको एग्जेम्पशन मिली हुई है अंडर सेक्शन 10A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो है वो 15% के बेसिस पर कंप्यूट किया जाता है, बुक प्रॉफिट प्लस सेस प्लस सरचार्ज के बेसिस पर। तो मैट को बुक प्रॉफिट्स पर जो है कंपनी के कैलकुलेट किया जाता है, मतलब जो कि जिसमें कोई एग्जेम्पशन वगैरह तब तक क्लेम नहीं की होती है। ओके, तो मैट का क्रेडिट क्या है? मतलब मैट जो अमाउंट ऑफ मैट जो एक कंपनी ने अगर पे किया है वो अगर टोटल टैक्स लाइबिलिटी से उनके जो है वो ज़्यादा बन रहा है तो जो डिफरेंस अमाउंट है उसको हम मैट क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, तो विवाद से विश्वास स्कीम क्या है? तो ये एक डायरेक्ट टैक्स स्कीम जो है गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी 2020 में, ताकि टैक्स पेयर्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स को जो है वो रिजॉल्व किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके टैक्स रिलेटेड लिटिगेशन को। अंडर दिस स्कीम इंटरेस्ट और पेनल्टी जो एसोसिएटेड थी डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट से उसको कंप्लीटली वेव ऑफ करने के प्रोविजंस थे। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Center notifies CAA rules. This topic is important for your governance section. So Ministry of Home Affairs has notified the Citizenship Amendment Rules of 2024, which would enable implementation of the Citizenship Amendment Act. So what was this Citizenship Amendment Act? So it seeks to amend the definition of illegal immigrant for Hindus, Sikhs, Parsis, Buddhists, Jains, and Christians who have come from Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh. And this act would provide them fast track Indian citizenship within 5 years. Otherwise, the provision was 11 years. And this act also provides for cancellation of overseas citizen of India registration where the OCI card holders have violated any provisions of the Citizenship Act or any other law that is in force in India. Okay, so who is eligible for it? So those who have been forced or compelled to seek shelter in India due to the persecution on ground of religion, and the cutoff date for such citizenship is 31st December 2014, which means that the applicant should have entered India on or before that date. This act would not apply to areas covered by India's sixth schedule, covered by the Constitution's sixth schedule areas, which are autonomous tribal dominated regions of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. This act will not be applicable to states which have an inner line permit regime. Okay, like Arunachal Pradesh, Nagaland, and Mizoram. Similarly, there have been several instances of protests, like in Assam. This legislation fueled fear that it would permanently alter the demographics of the state and it would be a violation of the 1985 Assam Accord. Okay, so what are these rules which have been notified recently? So eligible refugees who want to have citizenship of India, they can have it through registration or naturalization. They should submit an application along with an affidavit. The rules require them to submit this application electronically to an empowered committee through the district level committee and as notified by the central government. Once the application is submitted, the district level committee, which is headed by a designated officer, will verify those documents and it will also administer the oath of allegiance to the applicant. Only after that, of course, the citizenship would be granted. So the applicant must provide supporting documents like passport issued by the governments of Pakistan, Afghanistan, or Bangladesh, a birth certificate, etc., so as to prove that they have been the citizens of these countries before, even if those documents have expired now. Okay,
Basically, the motive is to see that they were actually citizens of these countries, and they also have to provide a valid proof that they entered India before 31st December 2014. So a visa stamp or a slip issued by census enumerators or permit in India, marriage certificate in India, any of these slips or documents can be provided. Okay, so once an application is approved, applicants will be granted a digital certificate based upon which citizenship would be issued. So, what has changed the producers to grant citizenship? Earlier, citizenship applicants were made to the district collector, who is under the administrative control of the state government. But the new rules provide for an empowered committee and a district level committee to be instituted by the center for receiving and processing the applications. These applications are to be submitted electronically, and this empowered committee would be headed by a director. Okay, so there will be other members also, and some invitees also to this committee. So the government is contemplating that some states would not be complying with the provisions of this act. So that's why citizenship being under the union list of Schedule 7, the government has taken control of this process of application by itself. Okay. So the next topic is Mission Divyastra. This topic is important for your security section. So India has announced the successful testing of an Agni missile capable of carrying multiple warheads, meant to hit multiple targets simultaneously. This system is equipped with indigenous avionics systems and high accuracy sensor packages. So Agni 5, we know that it is developed indigenously by DRDO, and it is equipped with multiple independently targetable re-entry vehicle technology called the MEAV technology. So it has a range of more than 5,000 kilometers. Agni 5 uses a three-stage solid fuel engine which can reach most parts of China. So what is MEAV technology? So basically, it can target multiple locations which can be hundreds of kilometers apart from each other, and with just a single missile. So as of now, only the US, Russia, China, France, and UK have this technology, or MEAV equipped missiles, and these missiles can be launched from land or from sea also. MEAVs were originally developed in early 1960s to allow a single missile to carry multiple nuclear warheads, and it was first done by US. Okay, so in contrast to a traditional missile which carries just one warhead, MEAV missiles they carry warheads which can be released from the missile at different speeds and in different directions. So that's why it is a very complex technology. It requires a combination of large missiles, small warheads, accurate guidance, etc., to work simultaneously during the flight. So, if we look at Agni missiles, then India has been able to acquire a credible minimum nuclear deterrence due to these Agni missile system, which is integral to India's second strike capability. So, these missiles are solid propelled ballistic missiles, which range between 700 to 5,000 kilometers. Agni missile is a component of the Integrated Guided Missile Development Program, which was launched in 1983. The first Agni missile was tested in 1989. Okay. So the next topic is Software Technology Parks of India. This topic is important for your economy section. Recently, Software Technology Parks of India has launched this Center of Entrepreneurship FinGlobe. So this is a Software Technology Parks of India are a premier autonomous science and technology organization under Ministry of Electronics, and it is engaged in promoting IT industry, innovation, R&D, and startups in this industry. And the objective is to promote the development and export of software and software services, to provide statutory and other promotional services to the exporters, to provide data communication services, and even promote MSMEs, so as to create them to create conducive environment for them to export their IT or IT products, especially the software products. So the next topic is Lachit Borphukan. This topic is important for your art and culture section. PM Modi has recently unveiled a 125-foot bronze statue of Ahom General Lachit Borphukan at his burial site in Assam's Jorhat district. So he was a legendary army commander of Ahom Kingdom, and he was known for his leadership in the 1671 Battle of Saraighat. He defeated the Mughal forces, and he was one of the five Borphukans of Ahom kingdom. He preferred guerrilla tactics. He was buried at the Maidan, which is the burial ground for Ahom royals and nobles. So if we look at Ahom kingdom, it existed and it ruled the areas of Assam.
between 13th century to 19th century, and it was a prosperous multi-ethnic kingdom which spread across the upper and lower reaches of Brahmaputra Valley, surviving on rice cultivation in its fertile lands. Holmes engaged in series of conflicts with Mughals, starting from the reign of Jahangir till the reign of Aurangzeb. Okay, so the next topic is RPTUAS scheme. This topic is important for your economy section and also your governance section. So Department of Pharmaceuticals has announced the revamped Pharmaceuticals Technology Upgradation Assistance Scheme. The objective of the scheme is to offer subsidies based on quality reimbursement, aiding pharmaceutical companies. So these revised guidelines aims to support those pharmaceutical companies who have invested in upgradation to the revised schedule M and WHO GMP standards. Okay, so this scheme benefits will be expanded to MSME also. So basically any pharmaceutical manufacturing unit with a turnover of less than 500 crores would be supported through this scheme if they follow the schedule M and WHO good manufacturing practice standards. And apart from that, if they also invest in HVAS systems, water and steam utilities, testing laboratories, their investment, a certain percentage of their investment would be reimbursed. Okay, this scheme also allows for integration with state government schemes so as to give additional benefits. So units having less than 5 crore turnover will get an incentive of 20% of investment under eligible activities. Units with turnover between 50 crore to less than 250 crore would be getting the 15% of their investment back. And those with turnover ranging between 250 crore to 500 crore would be getting the 10% of their investment under eligible expenses. Okay. So the next topic is PFAS. This topic is important for your environment section. So MIT chemists have designed a sensor which detects tiny quantities of PFAS chemicals which are found in food packaging, non-stick cookware and many other consumer products. So PFAS are a group of human-made chemicals which have been widely used in various industrial and commercial applications. They were first used in 1940s and they are now in hundreds of products. They are also known as forever chemicals because they do not break down naturally, they do not degrade easily, they have high chemical stability, and they are resistant to heat, grease and water. They are used in stain and water resistant fabrics like carpeting, cleaning products, paints, firefighting foams, and widespread use of PFAS has resulted in increasing levels of contamination of air, water and soil. So the next topic is Bureau of Indian Standards. This topic is important for your economy and your governance section. Government of India has recently initiated a scheme through BIS for the upgradation and strengthening of the laboratory networks in the country. So what is BIS? BIS is the National Standard Body of India, which was established under BIS Act of 2016, and it aims to ensure development of standardization, marking and quality certification of goods, and it functions under the Ministry of Consumer Affairs. It provides safe, reliable, quality goods, minimizing health standards to consumers, and it also operates product certification schemes. For example, certification of BIS is mandatory for certain classes of products which directly affect public health and safety. Okay. So the next topic is minimum alternate tax. This topic is important for your economy section. So Income Tax Appellate Tribunal has recently observed that the assessee was entitled to claim credit for minimum alternate tax under the Vivad Se Vishwas scheme. So minimum alternate tax is a provision in the Income Tax Act of India, which is designed to ensure that companies which report substantial book profits but pay little to no income tax due to several exemptions and deductions, they are subject to a minimum level of taxation. So the aim is to curb tax avoidance by companies who manipulate their financial statements so that they have to pay a fixed percentage of their profits as tax. So this is applicable to all companies including foreign companies, but it of course does not apply to companies who have been granted exemption under section 10AA of Income Tax Act, which basically pertains to special economic zones. So minimum alternate tax is calculated at 15% on book profit plus cess and surcharge, and it is calculated on the book profits of company,
the level at which no exemption has been made as at that time. So what is MAT credit then? So it is the amount of MAT for a company which is greater than its when amounts of the MAT of a company is greater than its normal tax liability, then the difference between those is called MAT credit. Okay. So what is Vivad Se Vishwas scheme? So it is a direct tax scheme which was introduced by government in 2020 for settling disputes between taxpayers and income tax department. And of course, the aim was to minimize tax related litigation. And under the scheme, interest and penalty associated with the disputed tax amount is completely waived off on the final settlement of the disputed tax amount. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.